Good evening, everyone. Welcome to the first session on the Companies Act 2013. Let's quickly start the discussion, guys. So this is our syllabus from the Companies Act 2013. We don't have to study the entire act. Okay, we don't have to study the entire act. The Companies Act 2016 is 2013 is quite having a lot of provision, right? It's quite bulky. We don't have to study each and every provision. This is a list that we need to study for the PFRDA and for the SEBI examination. Okay, we are having the chapter of prospectus, allotment of securities, share capital, debentures, declaration and payment of dividends, audit and auditors, appointment and qualification of director, meeting of the board, and National Company Law Tribunal and Appellate Tribunal. Okay, these are the topics that we need to study for this particular examination. If I talk about some of the important chapters, then I can say prospectus, audit and auditors, dividend, meetings of the board, and NCLT are some of the important topics on which they frequently ask questions in the previous year paper as well. We can see that in both PFRDA and in SEBI examination, a lot of questions they have asked from these topics. Plus, Companies Act or company law. If I talk about SEBI exam, PFRDA exam, or any other competitive examination, they are increasing the weightage of the company law part. Okay, so it will be a very scoring subject for us. It's quite straight. The very first thing is it's completely theory, so you don't have to focus too much on the concepts and the numericals there, right? स्ट्रेट है यहाँ पे, बिल्कुल कोर थ्योरी है. सो ओनली दो चीजों का आपको ध्यान रखना है. एक बार आपने जब समझ लिया तो उसके बाद मल्टीपल रिविजन हमको रेगुलरली देने हैं. ओके, वी नीड टू गिव मल्टीपल रिविजन, अदरवाइज प्रोविजन हम लोग भूल जाएंगे. दैट्स द मेन प्रॉब्लम जो मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली आती है. Introduction to the Companies Act 2013. So, Companies Act was enacted to consolidate and amend the governing laws in the company in the India, right? So, in India, we were already having a law. Okay, so this particular act came into force to consolidate and amend the law governing the companies in India. Can you tell me what was the act before the Companies Act 2013? Very good evening, everyone. Which was the act which was there before the Companies Act 2013 was there? Any idea? कौन सा एक्ट था कंपनीज एक्ट 2013 से पहले? Yes, 1956. There used to be a Companies Act 1956 earlier, and after that Companies Act 2013 came into picture. So it updated the act plus consolidated each and every laws and regulation related to companies. So now we are having 2013. अब तो क्या 2013 भी पुराना हो चुका है काफी, right? We are now living in 2025. So the act consists of 470 sections. We don't have to study 470 sections, 7 schedules, and 29 chapters because we are having this much only in our course. Okay, we need to focus on these chapters only as of now. The definition of company. So usually in section 2, this is called as section. This is called as subsection. So in section 2, there are a lot of definitions. What is the definition of company? It is stated by section 2 subsection 20. This is section, this is subsection. And let's suppose we are having alphabet A as well. So this is the section, this is the subsection, and this is the clause, right? This is the clause.
So section 2 subsection 20 clause A, for example. Here we can see that section 2 subsection 20 defines what company is all about. What is a company? So company is a incorporated, a company incorporated under this act or any other previous company act. So whether you are registered as a company in 2013 act or any other previous act which is 1956, right? That's also a case when you can be classified as a company. Okay, सर मैंने तो 1956 में रजिस्ट्रेशन लिया, अरे भाई तुम भी कंपनी हो, क्या हो गया 1956 में लिया वो 2013 बन गया, तो तुम्हारी कंपनी का भी 2013 से गवर्नेंस होने लग गया. Now to be a company, registration is a compulsion. You need to get yourself registered under the Companies Act 2013. That's a mandatory requirement. सर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे हो तो, बिजनेस खोल रहे हो तो कोई बात नहीं, खोल सकते हो. पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. नो डाउट इट इज रिकमेंडेड कि आप रजिस्ट्रेशन लो पार्टनरशिप में, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि आप पार्टनरशिप एक्ट 1938 के अंदर रजिस्ट्रेशन ले ही लो. इट्स नॉट कंपल्शन. इन कंपनीज एक्ट 2013, if you want to open a company, you need to get yourself registered under the act. That's a compulsion. Features of the company. अच्छा, can you tell me some of the features of the company? Any idea about that? किसी ने सुना हो, किसी का कुछ बैकग्राउंड हो, यूट्यूब पे कुछ देखा हो. फीचर्स ऑफ द कंपनी. सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेस एंटिटी. ओके, एनी अदर ओपिनियन? और कुछ? बिजनेस एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है. लिमिटेड लायबिलिटी. ओके, वेरी गुड. और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर. वेरी गुड. कॉमन सील है ना, कॉमन सील इज ऑल्सो फीचर. Okay, so let's discuss about some of the features of the company. Incorporated association. Obviously, if I want to incorporate a company, I need to incorporate it under the act which is 2013 as of now, Companies Act 2013 now. So it needs to be incorporated, that means it needs to be registered. Artificial person. Sir, artificial person, companies cannot be a natural person, so it can be artificial person. Can you guys tell me where we learned the concept of artificial person in the past? When we were studying accounting, when we were studying costing, when we were studying any other thing? Was there something related to artificial person? Can anyone remember that? Commerce and accountancy. Okay. Which topic in commerce and accountancy? किसी को याद नहीं आ रहा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में कौन सा टॉपिक था जहां पे हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में? Basic rules and principles of accounting. Okay, again a general answer. Be more specific.
Can you just give me the name of the topic where we studied this concept? It was a rule, definitely, for sure it was a rule. But which rule? How many rules we are having in accounting? And this concept was a part of which rule? Nobody remembers that. Yes, traditional rule. It was there in the traditional rule of accounting. Traditional rule of accounting में personal account में natural person, artificial person and representative personal, right? वहाँ पे we have studied artificial person. That means Reliance Industry, Adani Enterprise. These are corporate entities, right? So as per traditional rule of accounting, they are classified into artificial person. Why we call it a artificial person? Because company is a real person. It's not a real person, but an artificial person, right? It is having some kind of personality. It is having some kind of personality. Like I can enter into a contract. Mukesh Ambani sir can enter into a contract. Reliance Industry can also enter into a contract, right? Can you enter a contract with Adani Enterprise? Yes, you can enter a contract in the name of the company. That's highly possible. That's great. Which IPO? I also got one lot today of NSDL in the morning, but the GMP was just 10%. Okay, I got a subscription. I got an allotment of NSDL today morning only. So here, artificial person is nothing but a personality of the company, right? Okay, Lotus and NSDL, great. Company is not at all a fictitious person. It is a artificial person. There is a difference between being fictitious, being fake, and being artificial. Okay. Separate legal entity. What do you mean by separate legal entity? Company is distinct from its members. That we also learned in business entity concept in accounting, right? Company is distinct from its members. Company अलग है, members अलग है, okay? Company is a separate entity, member is a separate entity. Let's suppose Reliance Industry is a separate entity. Mr. Mukesh Ambani is a separate entity. Acha, what do you mean by members? What is the meaning of members here? Any idea? If I say a member of a company, what is the meaning of that statement? कैसे बनते हैं members? How one can become a member? Stakeholder, okay? Anything else? Anyone? By joining, okay? By joining how? If I join Reliance Industry, let's suppose I started working with Reliance Industry, I'll become a member, is it so? Or we call it as an employee, not member. What do you mean by a member? Shareholders, yes. Stakeholders are not members.
Stakeholders are concerned party. If I am a company, if I am a creditor of the company, I am also a stakeholder, but I am not the shareholder. If I am a bank, I have given a 1 crore loan to Reliance Industry. I am a stakeholder, but I am not a shareholder. So members means shareholders. In Companies Act, member का मतलब shareholder होता है. Okay. So separate legal entity, there is a very famous case law, Salomon and Salomon Company Limited. In this particular case law, it was concluded that company is a separate legal entity. Okay, just remember the name of this particular case law. It's a very famous case law. I don't know whether it will come in the examination or not, but it might come. Okay, there are chances काफी कम है, still आ सकता है कभी. Okay, Salomon and Company Limited. Okay, a member can transfer his property to the company and vice versa. Why? Because it is a separate legal entity. It can enter into contracts in his own name, right? Perpetual succession. Okay, perpetual succession. What do you mean by perpetual succession, guys? Anyone? What do you mean by perpetual succession? Any idea? What is the meaning of succession? Company never dies. Members will succeed. Yes. Perfect. Perpetual succession. In case of death of all the members, the shares held by those members shall be vested in the legal representatives. They do have their nominees, they do have their legal representatives, right? So company will never die. Even if all the members can die, but the company will keep on going forever. Okay? Company is not a natural person who will die. Company is an artificial person. Okay, so death, insolvency of a person, insanity of a person, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Company will continue to go. It will always be in existence. So a line, members may come and go, but the company continues to exist forever. This states perpetual succession. Okay, please do remember, they can give you this line and ask you the feature, which feature is related to this line as per the Companies Act. So that's perpetual succession. The members may come and go, but the companies continue to exist forever. Acha, tell me one thing. There is a company ABC Limited. Mr. X is the CEO of the company. Then we have some members. And then we are having other board of directors. Who is the real owner of the company? Mr. X, members, or other board of directors? Who is the actual owner of the company? Who is the actual owner of the company? Members. Very good. Members are the actual owner of the company. Okay, it's not the CEO, it's not the BODs. They all are appointed by members only. Okay, ultimately members are the real owners of the company. If I hold one share of Reliance Industry, can you say that I am the owner of Reliance Industry? Yes.
I do have a fractional ownership in Reliance Industry. I'm holding one share of Reliance Industry, say for example. What if I start holding 10 shares in HDFC Bank? Yes, I'm a owner. I'm the owner of those 10 shares in HDFC Bank. So let's suppose Reliance or HDFC Bank is declaring dividend. I will be also getting a part of it. So members are the real owners. When they will be doing the AGM, annual general meeting, I will also be invited. Right? If you guys buy a share of Reliance Industry, you guys will also be invited. You'll be getting mails regarding the invitation for the annual general meetings and extraordinary general meetings. Why? Because you are the real owners of the company. Okay. Common seal. A common seal is known as official signature of the company now because the company is an artificial person. Person होता तो sign कर लेता. Can a company sign? Yes, via common seal. There is a common seal of the company. वो seal लगा दी मतलब कंपनी ने साइन कर दी है. ठीक है, ये भी एक फीचर है. Next feature is separate management. Now there are two things. Management and members. Three entities are involved: members, management, and company. Members are the real owners of the company. Members do not participate in day-to-day affairs of the company. Owners do not participate in day-to-day affairs of the company. They have appointed management for that work. They have appointed management. You guys please manage the company. Ensure very well that all the transactions, all the affairs of the company are going in line with the best market practices or not. Whether the company is doing well or not. Ensure that. So can I say that members are the real owners of the company? Because they don't get involved in day-to-day affairs. They have appointed management to look after the company, right? To look after the day-to-day business of the company. That's how it is done. So can I say that there is a separate management? The ownership is separate from the management. Sometimes it can be same as well. Okay, sometimes it can be same as well. However, we have seen that इनका management अलग होता है और इनका owner अलग होता है. इसलिए तो audit की requirement आती है. That's why there is a need of audit, because the management people are different, members are different. Now, how can the members directly trust the management? That's why there is a need of oversight. That's why we need oversight, audit, that whether the management has done everything properly or not. So members do not participate in the day-to-day management of the company. Management lies in the hands of the elected representatives of the members, which is called as board of directors or the management. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी. बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं? बीओडी बनाते हैं. सो लेट्स सपोज आई एम हैविंग सम डायरेक्टर्स इन माय कंपनी. इनको एज अ होल मैं क्या बोलूंगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलूंगा. आई विल बी कॉलिंग देम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Right? So the day-to-day management is with the board of directors. The ultimate control is with the members of the company. Transferable shares. I think one of you guys have mentioned about the transferability as well. Now shares are movable property. How? I can just easily transfer it. If it's a case of public company, we can easily transfer it. However, if it's a private company, there are some restrictions on the transfer. Later on, we'll be discussing about that as well. Okay. Later on, we'll be discussing about that as well.
separate property. Members are not joint owners or co-owners of the property of the company. Let's suppose कंपनी के पास एक बिल्डिंग है, ये कंपनी से फॉर एग्जांपल रूपम, मैंने और अतिथि ने चालू करी थी. से फॉर एग्जांपल हम तीनों ने मिलकर कंपनी चालू करी थी. So can I say that we are the joint owners of this building? No. I can say that we are the joint owners of this company. We are having equal share capital. We are having equal shares. But I cannot conclude that कि ये प्रॉपर्टी भी मेरी होगी. ठीक है, कल को मैं इस कंपनी से चला गया मेरे शेयर्स बेच के, से फॉर एग्जांपल मैंने मेरे शेयर्स सचिन को बेच दिए, सो सचिन अब नए ओनर हो जाएंगे कंपनी के. ठीक है. Company can acquire property and hold in its own name. Definitely, we have seen that. Members have no insurable interest in the property of the company. Members का कोई interest नहीं है property में. Members का interest है सिर्फ company में. ये फर्क है. Okay, that's the difference. अच्छा, tell me whether a company is a citizen or not. Whether a company can be a citizen or not. Whether a company can be citizen of India or not. It cannot be a citizen of India, right? That's not possible. Because as per the Citizenship Act, citizenship legislation, Indian Constitution is not allowing any artificial person to become a citizen of India. Okay, so artificial legal persons, considering artificial legal person is fine, but not a citizen, not considered as a citizen as per the citizenship legislation or the Constitution of India. Okay. There are two terms now, body corporate and a company. What do you mean by a body corporate and a company? Can you guys tell me what is the meaning of body corporate and company? Is there any difference or they both are same only? What is the difference between body corporate and company? No idea. Okay. Only a legal entity. Okay, let me tell you. Body corporate. When we talk about body corporate, it's a wider terminology. All the companies are body corporate, but all the body corporates are not companies. Yes, Rupam, very good. Company is a type of body corporate. When I talk about company, what is a company? What was the section that we just, I think we discussed that section for the first time in the first slide in this class, right? What was that section that defines the company? Two subsection what? Yes, 2 subsection 20, right? What is a company as per section 2 subsection 20? Company incorporated under this act, 2013 act,
or any other previous company law, that means 1956. It should be compulsorily registered under the 2013 Act or any other previous act, which is 1956. So all the companies are registered under the Companies Act. Body corporates, there can be an entity which is not registered under the Companies Act. We can call it as body corporate. Though it's a corporate entity, but we cannot call it as company as per the Companies Act, right? In order to become a company, a body corporate needs to take registration under the Companies Act 2013. As of now, it will be treated as a company. अगर बॉडी कॉर्पोरेट के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम उसको सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट बोल देंगे. से फॉर एग्जांपल एनी फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी आई, उसने नहीं लिया रजिस्ट्रेशन कंपनी का, इंडिया में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है कंपनीज एक्ट के अंदर, वी कॉल इट एज अ बॉडी कॉर्पोरेट. ओके, सो कैन आई से दैट all the companies are body corporates, but all the body corporates are not company? Body corporate is a bigger term, right? It's a huge term, it's a wider term. So that's what they have written in this particular line. Okay, this is the difference between a body corporate and company. Let's suppose Microsoft, say for example, let's assume that Microsoft is not registered as a Companies Act in the Companies Act in India. I know it is registered in India. It is having office as well in Gurgaon, in Hyderabad, in Bangalore. But let's suppose they are not registered. IBM is not registered. Say for example, I will call it as a body corporate. I will never call it as a company. I can only call company to those entities who are registered under the Companies Act. Okay. Right, so that's the basic difference. So section 1 of the Companies Act 2013, section 1 of the Companies Act 2013 or any act का section 1 will always be the title of the act. Please do remember, आप कोई भी act पढ़ रहे हो कभी भी, section 1 will always be the title of that act. Okay, section 1 will always be the title of that act. Usually in section 2 all the definitions are stated, just like we learned the definition of section 2 subsection 20. Now there are many subsections, all the definitions are there in the section 2 of the Companies Act. Okay, कभी कोई पूछ ले कि सारी definitions कहाँ मिलती है, section 2 में मिलती है Companies Act के, बहुत सारे subsection है. टाइटल कहाँ होता है, section 1 में मिलता है. ठीक है. Now, do you guys know that we are having two types of companies, private company and public company? Private company and public company. What is the difference? What is a private company? What is a public company? Any idea? पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है एनी स्टॉक एक्सचेंज में. ओके, एनी अदर ओपिनियन? पब्लिक ओन्ड बाय गवर्नमेंट. ओके, पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट की होती है. और एनी अदर ओपिनियन? ये दोनों चीजें मिथ है कि लिस्टेड कंपनी को पब्लिक कंपनी बोलते हैं. नहीं, जरूरी नहीं है. पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की होगी, नहीं जरूरी नहीं है. दीज आर मिथ. और बताओ, और कोई ओपिनियन? ऐसा हमको लगता है, एक्चुअली नाम है ना पब्लिक कंपनी. अच्छा, पब्लिक इन्वॉल्व है मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई. अच्छा, पब्लिक बहुत सारी पब्लिक है मतलब ये लिस्टेड होगी शायद, इसीलिए. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. In public company there are two bifurcations. It can be listed company,
It can be unlisted company. प्राइवेट कंपनी का कोई बाइफिकेशन नहीं होता. प्राइवेट कंपनी है. तो सर, if we want to get our share listed on a stock exchange, do we need to become public company? Yes. If you want to go for an IPO, first you need to be a public company, then only you can be a listed company. अरे पहले जनता के तो बनो, पहले पब्लिक के तो बनो, फिर लिस्टेड बनना. ठीक है. अभी बताओ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क होता है? नहीं आइडिया किसी को? शेयर्स तो प्राइवेट कंपनी के भी हो सकते हैं. शेयर्स तो प्राइवेट कंपनी के भी हो सकते हैं. हर कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं. ओके, सो आई गॉट द फर्स्ट पॉइंट. प्राइवेट कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स. सर, प्राइवेट कंपनी में एक लिमिट होती है नंबर ऑफ मेंबर्स की. ऐसे नहीं कि लोकल बस है, आ जाओ सब चढ़ते जाओ. नहीं, देयर इज अ लिमिट इन द नंबर ऑफ मेंबर्स. ओके, दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स द private and public company. If I talk about private company, minimum members can be 2. So let's suppose Atiti and I, we both have started a company. We are only two members. We can only start a private limited company. The name of our company is Atiti Pratik Private Limited. That's the name of our company. We are only two members as of now, right? Maximum numbers, we can go up to 200. Earlier it used to be 50. Now we can go up to 200. Okay, now we can go up to 200. Minimum directors, we need to at least have 2 directors. 2 members, 2 directors. Has the word private limited in the name. So we are having a name, Atiti and Pratik Private Limited. This private limited is a must. ये प्राइवेट वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, तभी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी. ओके, बट नाउ लेट्स सपोज, से फॉर एग्जांपल, रूपम ने बोला मुझे भी ज्वाइन करनी है ये कंपनी थोड़े दिन में. तो अब क्या हो गया? अतिथि प्रतीक रूपम लिमिटेड हो गया. प्राइवेट वर्ड हटा दिया. Why? Because now we want to shift to public limited company. Say for example, we are shifting to public limited company. We can definitely go ahead in the private as well. No problem at all. We want to shift in public company. Can we do so? No, we cannot do so. Why? Minimum members, at least 7 members we need in order to start a public company. 3 members cannot start a public company. Minimum 7 members need to be there. Okay, minimum 7 members need to be there if you want to start a public company. Maximum number, there is no limit. Imagine अगर पब्लिक कंपनी के ऊपर कोई लिमिट होती तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री फुलफिल कर पाता? नहीं, उसका तो उठा के कोई भी शेयर खरीद सकता है कल सुबह, राइट? सो पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी अनलिमिटेड. देयर इज नो लिमिट. हाउएवर, देयर इज अ लिमिट for the private companies membership, right? Minimum 3 directors in case of a public company, and they need to use the word public limited or limited. Let's suppose I started my own company, Pratik Taldar Private Limited.
Then I shifted to public company. I added 6 more members. So now we are 7 members. So it will be now Pratik Taldar Limited. Private हटाना पड़ेगा, or it can be Pratik Taldar Public Limited. I need to remove the word private if I'm shifting to public limited company. That's the major difference, guys. Okay, between public and private. Then we have authorized capital, nominal capital. Definitely every company needs to have. सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है जो इसमें लिखा है पब्लिक वाले में? देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, एक बार बता देता हूं ऐसे ही, एक बार ऐसे ही बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। पर अगर लिस्टेड कंपनी है, एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जब सेक्शन आएगा तब पढ़ाऊंगा, पर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर जानना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं सर, तो देखो मान लो मेरे पास 10 डायरेक्टर है, से फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 10 डायरेक्टर्स। अब सबके सब बिजनेस चलाएंगे तो फिर कंपनी के गवर्नेंस का कौन ध्यान रखेगा? राइट, कंपनी के गवर्नेंस का कौन ध्यान रखेगा? सो आई हैव 2 कैटेगरीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से, हम गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाना चाहते हैं। डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये इन्वॉल्व नहीं होते, ये बोलते हैं हमारा काम सिर्फ गवर्नेंस का है, कंपनी के अंदर सब ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। सर एग्जीक्यूटिव वाले को ही दे दो, नॉन एग्जीक्यूटिव को क्यों दे रहे हो? मैं ही अगर कंपनी में काम कर रहा हूं तो क्या मैं कभी बोलूंगा कि मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू कर रहा हूं? कभी नहीं बोलूंगा। मैंने कोई फ्रॉड किया, मैं क्या आगे आके बोलूंगा मैंने फ्रॉड किया, मैं पागल हूं? नहीं, ठीक है। मैंने कोई एरर किया, मैं कुछ जाके बताऊंगा मैंने एरर किया? नहीं बताऊंगा, मैं हमेशा छुपाऊंगा। दैट्स व्हाई वी नीड सम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एज वेल, राइट। इस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में सम ऑफ द डायरेक्टर्स को वी कॉल एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। दीज आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वो बोलते हैं हमारा कंपनी से कोई ना फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, न ही और किसी तरह का रिलेशनशिप है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और अदर देन इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। जिनका जीरो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, मतलब एक क्राइटेरिया है जो आगे जाके मैं बताऊंगा कि इनडायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, क्या रूल्स होते हैं, वो आगे जाके बताऊंगा। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मींस ऐसे डायरेक्टर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और डे टू डे एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करते, प्लस दे डोंट हैव अ फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद द कंपनी। ना कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लोन वोन नहीं ले रखा कंपनी को, ना दे रखा है ना ले रखा है। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इसलिए उनके नाम के आगे क्या लग जाता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अच्छा, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। अरे पहले पब्लिक को तो इन्वॉल्व करो, जनता तो लेके आओ पहले थोड़ी बहुत, कम से कम 7 लोग तो हो, पब्लिक कंपनी बनाओ। पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है, अनलिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, बोथ आर दी पॉसिबिलिटीज, बोथ आर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल वही होती है जो ऑथराइज्ड है, आरओसी से हमको परमिशन मिली हुई है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वी कैन रेज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलके एक साथ हमको क्या बोलते हैं? उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे अगर मेरे को सारे डायरेक्टर को बुलाना होगा तो क्या बोलूंगा? मिस्टर ए इधर आओ, मिस्टर बी इधर आओ, मिस्टर सी इधर आओ, मिसेस डी इधर आओ। नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इधर आओ। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इधर आओ, इस तरह से बुलाएंगे। बीओडी भी बोलते हैं इनको। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है फटाफट से बता दो, और कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाए थे, आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 which defines the word financial statement. What is the section? What is the section which defines what are financial statements?
देखो पहली बात तो डेफिनेशन है, सो इफ इट इज अ डेफिनेशन सेक्शन तो 2 ही होगा। सबसेक्शन क्या था? आई थिंक फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ाया होगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे। ओके, बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस in equity, okay, statement of changes in equity and notes to accounts, perfect. These are the 5 financial statements as per Companies Act. So a company registered under the Companies Act 2013 needs to prepare these 5 financial statements. What is the section 2? What is the subsection which states that companies need to prepare these 5 types of financial statement? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेबी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, नो, इट्स नॉट सेक्शन 2 सबसेक्शन 3. Anyone? टू सबसेक्शन 20, अरे 2 सबसेक्शन 20 में तो कंपनी की डेफिनेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थोड़ी है। ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था 220, 2 सबसेक्शन 20 डिफाइंस व्हाट इज अ कंपनी, व्हाट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2 सबसेक्शन 1 नो, 2 सबसेक्शन 40, ठीक है। अभी तक तुम लोगों ने जितने नंबर बताए उनको टोटल भी कर दो तो भी 40 नहीं होता है, याद रखो भाई, ठीक है। 2 सबसेक्शन 40, 2 subsection 40 states that financial statements includes balance sheet, P&L account, cash flow statement, statement of changes in equity, and notes to accounts, or we can call it as explanatory notes. Okay, please do remember this thing. सर ये क्यों याद रखना? अरे भाई तुम्हारे कॉमर्स और अकाउंट्स में भी है, यहाँ पे भी है, तो ऐसे ओवरलैपिंग टॉपिक्स जो होते हैं ना वो एग्जाम में आते ही आते हैं जनरली। आरबीआई में भी पूछा है, सेबी में भी पूछा है, पीएफआरडी में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट क्या बताती है? देखते हैं किसको कितना याद है आज, थोड़ा सा देखते हैं ऐसे ही। बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन, वेरी गुड। P&L अकाउंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन कैश फ्लो बताती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर जो भी चेंज होता है वो बताती है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स एक्सप्लेन करते हैं। वेदर फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज इट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट? अरे ऑब्वियसली इट इज नॉट। अगर होता तो यहाँ लिखा हुआ होता ना, होता तो यहाँ पे लिखा हुआ होता फंड फ्लो स्टेटमेंट, अभी तो नहीं लिखा हुआ है, मतलब नहीं होता है। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अक्रूअल बेसिस पे बनता है? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अक्रूअल बेसिस पे बनता है? मैं इसी आंसर का वेट कर रहा था। अरे भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अकेला ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अक्रूअल बेसिस पे नहीं बनता है।
बाकी सब तो अक्रूवल पे बनते हैं ना, सिर्फ बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता अक्रूवल पे, सब अक्रूवल पे बनते हैं एक्सेप्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्सेप्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल आर प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल। सर कैश फ्लो को भी बना दो ना अक्रूवल पे, अरे फिर मतलब ही क्या रहेगा, फिर वो फ्लो कैसे बताएगा कैश का, राइट? फिर वो फ्लो कैसे बताएगा कैश का? एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रूवल बेसिस पे बनता है, यही ऑप्शन होंगे। तुम लोग टिक करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट या पी एंड एल या बैलेंस शीट, अरे सब अक्रूवल पे बनते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को छोड़ के, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी अक्रूवल पे बना दूंगा तो फिर बन तो वही गया अल्टीमेटली, राइट? वो तो कैश, उसके नाम में ही कैश है यार, उसको तो कैश पे बनने दो, ठीक है? गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? ऐसी कोई भी कंपनी जहां पे नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, नॉट लेस देन 50%। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, नॉट लेस देन 50%। यहां मोर देन 50% नहीं लिखा है, नॉट लेस देन 51% लिखा हुआ है। कम से कम 51% किसके पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट? दैट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। दो इंपॉर्टेंट चीजें, दो चीजें होती है देखो, कंपनी बना रहा हूं तो सबसे पहले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इट इज कॉल्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इट डिफाइंस द लिमिटेशंस एंड द पावर्स ऑफ द कंपनी। क्या मेरी लिमिटेशन है, क्या क्या मेरी पावर है मेरी कंपनी की, वो सब मेरे चार्टर में होगी। इट इज कॉल्ड एज चार्टर ऑफ द कंपनी। ये सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा तो बनाऊंगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा, मेरी कंपनी का क्या नाम है, ऑब्जेक्ट क्या है, राइट? क्या करने वाली है मेरी कंपनी, what is the purpose of my company, right? Now anything which is beyond the purpose will be called as ultra virus. These are void. Void मतलब ये legally enforceable ही नहीं है, right? Anything beyond the purpose clause. आज मैं टी शर्ट बना रहा हूं तो मेरा काम क्या हुआ, टी शर्ट बनाना होगा। बियॉन्ड माई स्कोप कुछ आ गया तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अगर आपको सब कुछ करना है तो फिर आप सब कुछ लिखो ऑब्जेक्ट क्लॉज में, क्लियर रखो ऑब्जेक्ट क्लॉज को। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का है, कौन सी स्टेट में, वो बता दो। लाइबिलिटी क्लॉज, क्या आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, क्या आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है? दो तरीके से लाइबिलिटी हो सकती है, एक तो लिमिटेड बाय शेयर, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 रुपए तक पे करना मेरी गारंटी है, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। मैंने शेयर को सब्सक्राइब कर लिया तो मुझे 10 रुपए तक देना है। गारंटी, मैंने गारंटी दे दी कि अगर कंपनी को कुछ हो गया तो मैं 1 करोड़ कंट्रीब्यूट कर दूंगा मेरी गारंटी पे। सो माई गारंटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी, कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब बंद हो रही है कंपनी, इफ आई हैव गिवन द गारंटी आई नीड टू गिव इट, सो द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। कैपिटल क्लॉज, कितनी कैपिटल है, ऑथराइज कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है, पेड अप कितनी है, वो सब डिटेल। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं, कौन कौन मेरे शेयर होल्डर्स हैं, ये हो गया मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वी ऑल्सो कॉल्ड दिस एज चार्टर ऑफ द कंपनी, ओके? Then once I am done with the formation of company, now I need to set rules and regulations. I now need to set rules and regulations, so I now need to draft articles of associations. I will be drafting articles of association AOA. These are the bylaws, or I can say that rules and regulations for internal management. कंपनी में कैसे बिहेव करना है, कौन क्या करने वाला है, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आएगा। सर मेमोरेंडम में लिख देते, क्या जरूरत है, अरे मेमोरेंडम का कचरा हो जाता, कितनी चीजें लिखूंगा, राइट? वहां ऑलरेडी क्लॉज है ना। तो तुम्हारे इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन के लिए तुम अलग बुक बना लो, तुम तो रोज रूल चेंज कर दोगे, सो उसके लिए मेक अ सेपरेट बुक, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैनेजमेंट कैसे क्या काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, हर चीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कवर हो जाएगी। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, रेस्ट विल बी कवरिंग इन
tomorrow's session. Okay, bye bye, take care. Thank you so much, everyone. Bye bye.